Okay, so in the last lecture we discussed the different configurations in which we can use the diode, such as series combinations and parallel and series combinations, and a combination of both a parallel and series connection. We solved few problems by replacing the diode with its equivalent circuit. For forward bias, we use a battery of knee voltage for germanium 0.3 volt and for silicon 0.7 volt. Whereas for reverse bias, we just open circuited and we just disconnected the branch in which we have we were having a diode. So continuing that, first we will discuss how to make digital circuit using diode. Just a brief intro to that section. I think you guys are aware of what logic gates are, such as OR gate, AND gate. Okay, so are you guys aware of that? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so in OR gate, what we have is that the output will be high if any of the inputs is high. अगर आपकी कोई भी एक इनपुट हाई है which means 1 है तो आपकी जो आउटपुट है वो 1 होगी, and the output will be 0 only in case when both the inputs are 0. तो उस लॉजिक के हिसाब से अगर हम एक सर्किट डिजाइन करना चाहें तो वो हमारा सर्किट जो है वो हम ऐसे बना सकते हैं. ठीक है, हमने यहाँ पे दो डायोड लगाए हुए हैं D1 एंड D2. ठीक है, जो कि हमारे पैरेलल में लगे हुए हैं. यहाँ पे हमारी दो इनपुट्स लगेंगी एंड उन दोनों के जो पैरेलल में कॉम्बिनेशन बनता है उस कॉम्बिनेशन की सीरीज में हमने एक रजिस्टर लगाया हुआ है एंड वी विल टेक आउटपुट अक्रॉस द रजिस्टर. Okay, now we will try to make the truth table. We will try to observe the output for different combinations of the input. Now that we have two inputs, and there are four combinations that are possible. That is 0 0, which means both the inputs are low, 0 1, 1 0, and 1 1. So for 0 0, this diode, what will be the condition for this diode for 0? Will it be forward bias or reverse bias? Reverse bias. And similarly for this diode, if instead of E equal to 10 volt, if I replace it with 0 volt, then what will be the value? What will be the condition of the diode? Reverse or forward? Yes, reverse or forward? Reverse. Reverse. So both the diode will be reversed and we will replace them with open circuit. Okay, so if we replace both the diodes with open circuit, then this diode will be disconnected, this diode will be disconnected, and what we will get output is 0. Now try to make any one combination as high, or try to apply some voltage to the any one of the inputs. So this is our input 1, this is our input 2, and this is our output. अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे किसी एक डायोड पे हाई वोल्टेज लगाते हैं, तो उस केस में क्या होगा, दिस डायोड विल बी फॉरवर्ड बायस्ड, और अगर ये डायोड आपका फॉरवर्ड बायस रहेगा तो उस केस में हम इसको रिप्लेस आइडियल की डायोड मान के चलें तो हम इसको सिंपली शॉर्ट कर सकते हैं, और अगर प्रैक्टिकल डायोड लें तो हम यहाँ पे 0.7 वोल्ट की एक बैटरी लगा सकते हैं. सो इन दैट केस व्हाट विल बी द आउटपुट वी नोट. अगर हम इसको शॉर्ट कर देते हैं, इस लाइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं हम इस ऊपर वाले सर्किट को, तो आपके आउटपुट जो है वो यहाँ पे कितनी मिलनी चाहिए? 10 volt. 10 volt. So if I am representing 10 volt with high 1, that means output will be
1 volt. Now in same situation, if I am having this as 0 volt and this as high volt, तो उस केस में हमारे आउटपुट क्या मिलेगी? हम यहाँ पे रखेंगे 0 वोल्ट और यहाँ पे रखेंगे 10 वोल्ट, तो उस केस में हमारे आउटपुट कितनी मिलेगी? This diode will be reverse biased and this diode will be forward biased. So current will conduct and we will get the output V naught equal to 10 volt in case of ideal diode, which means 1. And if both the inputs are 1, in that case also we will get output 1 because current will flow through the resistor. That's how we design digital logic gates using diode. This was just an example. Yes. In both branch we have taken 10 volt battery if we have to take for 1 or 0. It depends. आप 5 वोल्ट भी ले सकते हो, 7 वोल्ट भी ले सकते हो, 9 वोल्ट भी ले सकते हो. Okay. हाँ, it is just a representation that 1 means the input is high. Okay. Now using similar logic, you have to design all the gates. How will you connect two diodes to make a 2-input AND gate or an NOT gate? ठीक है, इस तरीके से आप जो है वो सारे जितने भी लॉजिक गेट्स हैं हमारे वो आप करके देखिएगा. ठीक है, now we will move on to the next topic, which is half wave rectifier. खड़ो चला दो. ये नहीं है कि खुद चला दो. Okay, so next topic is rectifiers using diode. This is the one of the basic and very important applications of a diode. And first of all, we should know what do we mean by rectification. So anyone, any idea? Rectification means conversion of AC current to DC current. AC to DC. Yes. 8:20 है. देख लो फिर जाके. Please mute yourself. Please mute yourself. ठीक है, so what you said about rectifier, that is true, but in digital electronics or analog electronics, when we will study the circuit of rectifier, we will define it in a more specific way, more confined way. Can you guys see the screen now? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so a rectifier is an electrical device that converts alternating current which periodically reverses the direction to direct current which flows in only one direction. ठीक है, तो हमें यहाँ पे डायरेक्शन का जो है वो पार्ट ध्यान में रखना है कि जब हमारा अल्टरनेटिंग करंट होता है उसमें दो पोर्शन होते हैं, पॉजिटिव हाफ एंड नेगेटिव हाफ. We have to convert that into DC current such that it flows in only one direction. Now that direction we can have only positive direction or we can have only negative direction depending upon what type of DC power supply we want.
There are two types of rectifiers. One is half wave and second is full wave. In half wave rectifier, only half portion of the input signal is rectified and another half is left out. उसमें हम सिर्फ एक ही portion को rectify करते हैं. Whether we will rectify positive part or we will rectify negative part. Only one of them will be rectified. Whereas in case of full wave, both the cycles will be rectified. So we will have output in both the cycles, in positive half also and in negative half also. For full wave rectifier, we will study two different rectifiers. One is bridge rectifier and another rectifier using center tape transformer. Okay, so for explanation and for studying the half wave rectifier, we will use sinusoidal signal as the input. Okay, so this will be our circuit for half wave rectification. This will be our input. This is a sinusoidal input. Now you can see only one cycle of the input wave for time period t. It is having maximum magnitude as Vm. So if you want to represent it mathematically, you can represent it like this. That V input is equal to Vm sine of omega t, where omega is the frequency of the angular frequency of the signal. Okay, so this type of signal we will apply to this circuit and we will try to observe what type of output we are getting at this end. Okay, so half wave rectifier will consist of one diode and one resistor connected in series. We will take the output from the resistor end and we will apply the input to across the diode. Okay, so now let's see what happens when we apply this type of signal to this type of circuit. Okay, so this is the working of this particular circuit for positive half only. We will consider only first positive half and then we will consider negative half. So this is how this circuit will behave in positive half. Now, if we consider that the diode is ideal and in positive part, the input voltage is higher than 0 volt. So that means your diode will be forward biased. And in forward bias, the ideal circuit can be represented like this. You can simply represent this diode as this short circuited line in case of ideal diode. So the same circuit will now become like this. Now here we have input signal and input signal is our one simple first half of the wave. We are taking it only for 0 to t by 2 time cycle. Or this is our maximum amplitude Vm. This is the input that we are applying here. Now we have replaced the diode with its equivalent circuit. Now the circuit is consisting of only one resistor and we are taking the voltage across that resistor. Okay, so whatever input we will have right now here, that will be developed or observed across the resistor. अगर आपने यहाँ पे 5 वोल्ट दिया तो 5 वोल्ट मिलेगा, 6 वोल्ट दिया तो 6 वोल्ट मिलेगा, 1 वोल्ट किया तो 1 वोल्ट मिलेगा. तो जैसे जैसे आपकी इनपुट वोल्टेज चेंज होती जाएगी, ठीक वैसे वैसे आपकी आउटपुट वोल्टेज भी चेंज होती जाएगी like this. So for positive half, the output of the half wave rectifier is like this, जिसमें आपका जो भी इनपुट साइकिल है वो as it is appear हो रहा है. Now you have to remember that now we are considering diode as ideal diode. It's not a practical diode. We will see how the output changes when we will be using a battery instead of the diode. But first you have to understand this, that how the half wave rectifier circuit behaves for positive half cycle considering ideal diode. So any doubt in this case to anyone?
the output of the half wave rectifier for the positive half. No, sir. Okay. Okay then. Now let's move on to the second part where we will have the negative half cycle as the input to the same circuit. Okay, so negative half cycle means the diode is reverse biased. And if the diode is reverse biased, then we can replace this with its equivalent circuit, which is simply open circuit for ideal diode. Okay, so now there is here we have negative half cycle of the input waveform, where this is equal to minus of Vm. This input signal will be applied here and we will see the output. But now we can see that there is no connection between this input and this terminal from where we are taking the output. That means the output will be 0 volt. So here we can see that from time t by 2 to t, we are having 0 volt because the diode is reverse biased. Okay, so considering the ideal diode, this is how our output should look like for a half wave rectifier. And if we take the waveform of the input and output and try to observe the behavior of the rectifier circuit, then we can observe, look at this diagram. This is our input that we have applied, and this is how our output will look like. So you can see that for positive part, we are having the output, and for negative part, we are having no output. So only one part of the input waveform has been rectified. That's why we call it as half wave rectifier. So what is the 0.318? Now, yes, 0.318. If you remember in physics, when you studied the AC currents, then you must have encountered with expressions of average power, average current value, and DC current value. Yes, There is sir. a method with which we have to derive that expression for a sinusoidal signal. Now, using the same concept, we have derived this expression for DC voltage also. We will consider that V is equal to V output. This V output is equal to Vm sine of omega mt for positive half and 0 for other half. So by applying the same concept, you integrate that over a half time period cycle and then you calculate its DC power. जब आप Okay, उस sir. DC पावर को कैलकुलेट करते हो तो उसमें आपका ये वाला फैक्टर जो है वो आ जाएगा, that your DC content in this particular for this particular waveform is 0.318 times peak voltage of the signal, that is Vm. Thank you, sir. Okay, anyone any doubt till now? No, sir. Okay, now we should move on to the next thing, which is considering the output by taking the ideal diode, sorry, a practical diode. Okay, for that we will look at this diagram. So instead of replacing the diode with a simple short circuit line, we will replace it with 0.7 volt बैटरी. ठीक है, तो जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन सोल्व करने हो, what do you do is you draw a dotted line which represents the minimum voltage required to make the diode forward biased. Now this was a silicon diode and you need 0.7 volt at least to make this diode forward biased. So you draw a line at the input waveform. जो भी आपके इनपुट वेवफॉर्म का ग्राफ है उसी के अंदर वी ड्रॉ अ लाइन विद Vt is equal to 0.7 volt. Now we
make two different lines at the point where this dotted line intersects the input waveform. That means we can say that from in this particular region, from this line to this line, when your input was going from 0 to 0.7 volt, your diode was reverse biased, or you can say that your diode was not forward biased. So if your diode is not forward biased, then what we will get is 0 volt at the output terminal. That's why we are getting here as 0 volt for this particular region. Now after 0.7 volt, if your voltage is increasing, then your diode will become forward biased and we will have output at the terminal across the resistor at this point. Now what will be the value of the output? For ideal diode, it was equal to the input, but for this practical diode, the input will be less than the output will be less than the input, and by what amount it will be less, that will be decided by the type of the diode. With now it is 0.7 volt, so this will be 0.7 volt less. इसको आप दूसरी तरीके से कैसे समझ सकते हो? You apply here input VE and you apply the KCL KVL equation in this particular loop. So VI, this is first part, this is 0.7 volt. So we can write here as VI just a minute, it's VI minus VT. This will be observed at the output equal to V naught. और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो is equal to I times IR रेजिस्टेंस. ठीक है, अगर हम यहाँ पे ये माने कि इसमें करंट फ्लो कर रहा है I, तो अगर आप इस इक्वेशन को भी लेंगे तो आपकी जो आउटपुट है वो यहाँ पे मिल जाएगी आपको VM माइनस VT. ठीक है, so output will be what will be the maximum output that we will get? That will be VM minus VT. ठीक है, anyone any doubt in this? ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो VM माइनस VT तक पीक जाएगा. उसके बाद जैसे ही आपका ये वाला साइकिल आएगा जिसमें हमारा V डिक्रीज करते हुए जा रही है वैल्यू, और जैसे ही 0.7 से नीचे जाएगी इन दिस पर्टिकुलर रीजन ऑल्सो our diode will be our diode will not be forward biased and the value that we will get here also will be 0. So this is the output of the half wave rectifier. When we take positive part, we observe only the positive part of the input waveform. ठीक है, आइडियल में आपका क्या था, वो हमने यहीं से स्टार्ट किया था उसको, और वो इस तरीके से आपका गया था. ठीक है, so this is the difference between the output of the ideal diode and practical diode for half wave rectifier. अब हम मूव करते हैं to the next part which is for negative half cycle. तो नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए हमारा सेम रहेगा कि आपके आउटपुट जो है वो हमेशा से ही 0 रहेगी. तो आपकी जो आउटपुट है यहाँ पे वो देख सकते हो इसी डायग्राम में है, यहाँ से लेके यहाँ तक 0 है. ठीक है, सो दिस इज हाउ द हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट लुक्स लाइक एंड इट बिहेव. इसमें आपका फिर थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो VDC में भी आ जाएगा. ठीक है, उसमें आपका 0.318 टाइम्स VM था. दिस विल बी एन अप्रोक्सीमेशन एंड 0.318 टाइम्स VM माइनस VT हो जाएगा. अप्रोक्सीमेशन इसलिए है क्योंकि जो वो आपका आइडियल केस में सिग्नल था वो 0 से लेके T/2 तक एग्जिस्ट करता था. इसमें जो है वो थोड़े से पोर्शन के लिए आपका एग्जिस्ट नहीं करता. दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग इट एज एन अप्रोक्सीमेशन. ठीक है, एनी डाउट?
No, sir. Okay, now please remember you have to derive this expression. आपको ये आना चाहिए. This was in your 12th physics in one of the chapters. How to derive the expression for DC voltage giving sinusoidal signal and average power, average value of the signal. तो उससे आप इसको निकाल सकते हो. ठीक है. Now let's move on to one practical consideration that we have to take while using the diode for practical application, and that is the PIV rating of the diode. Sorry, this is not PIL, this is peak inverse voltage. So peak inverse voltage PIV is a voltage rating that must not be exceeded in the reverse bias region of the diode will enter the Zener avalanche region. Okay, you must make sure that the output voltage in reverse bias condition is always less than the PIV rating of the diode, because PIV जो होती है वो आपकी होती है peak inverse voltage, and when you apply the peak inverse voltage, when you go just beyond peak inverse voltage in reverse bias region, then your diode will enter into Zener region. And in Zener region, if you remember the VI characteristics curve of the diode, the current starts increasing abruptly. There is a breakdown in the diode and an avalanche or Zener current will flow through the diode. So we have to remember, we have to understand this, and we have to apply this concept while designing the circuit. What type of input signals are applying, what is the maximum range in which your input signal springs. क्योंकि एक बार अगर Zener ब्रेकडाउन हो गया तो उसके बाद फिर उस डायोड को आप दोबारा से सीक्वेंस नहीं कर पाएंगे. So we have to make sure that our diode is safe. तो वो PIV रेटिंग कितनी होनी चाहिए वो डिपेंड करता है आपके सर्किट में कितने डायोड लगे हुए हैं. What is the maximum voltage that is being experienced by the diode in that particular circuit. तो हाफ वेव सर्किट में हमारा एक ही डायोड लगा हुआ था, और रिवर्स बायस में हमने ये कोशिश करके देख लिया कि उसका इक्विवेलेंट सर्किट हमने यहाँ पे बना दिया. ठीक है, तो इक्विवेलेंट सर्किट में हम उसको सिंपली ओपन करते हैं. नाउ वी विल चेक व्हाट इज द वैल्यू experienced by this terminal of the diode when we apply the input signal, the maximum negative value. तो मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू हमें पता है कि साइनसॉइडल सिग्नल है, Vm sin omega t है, तो मैक्सिमम वैल्यू विल बी minus Vm, that is equal to the what we say our peak value of the input signal also. तो हमारा जो पीक इनवर्स वोल्टेज है वो उससे हमारी कम होनी चाहिए, कम ज्यादा होनी चाहिए हमेशा. आपकी इनपुट वोल्टेज कभी भी इस वैल्यू से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. ठीक है, तो इसमें हम यहाँ पे लिख सकते हैं that our PIV ratings of the diode should be greater than or equal to Vn. ठीक है, the peak value of the signal भी लिख सकते हो आप यहाँ पे, peak value of input signal in negative half cycle. ठीक है, क्योंकि किसी भी मोमेंट पे इससे ज्यादा तो उसकी हो ही नहीं सकती. तो ये कंडीशन हमें ध्यान में रखनी है. ठीक है, अगर आपकी मान लीजिए PIV रेटिंग जो है वो 50 वोल्ट की है और आपने इनपुट सिग्नल लगा दिया साइनसॉइडल वो जो 60 वोल्ट तक है, तो पहले हाफ साइकिल में जैसे ही वो 50 को क्रॉस करेगा आपका डायोड जो है वो ब्रेकडाउन में चला जाएगा. उसके बाद फिर उसको आप उस तरीके से ऑपरेट नहीं कर पाएंगे जैसे वो नॉर्मली ऑपरेट करता है. ओके, so now let's move on to the next topic, which is our full wave rectifier. So full wave rectifier, as the name itself signifies, that in this circuit both the cycles, the positive half and the negative half,
will be rectified and we will get the output in both the cycles. There are two types of full wave rectifiers that we will discuss. Today we will discuss only one type, which is bridge rectifier. Now bridge means this design of the circuit will be such that it will form some kind of bridge interconnection of the diode. And in bridge rectifier we will use four different diodes. A set of 4 diodes will be used for bridge rectifier, which are connected in this particular session. ठीक है, D1 diode, D2, D3 and D4. और इनकी डायरेक्शन आपकी इस तरीके से है कि to one end one of the diode is P connected and another diode N is connected. Similarly to another terminal, P of the one diode is connected and N of the one diode is connected. And then we have one resistor in between this circuit. या आपका ब्रिज सर्किट जो है वो आपने पोटेंशियोमीटर वगैरह में भी पढ़ा होगा पहले, उसमें हमारे रेजिस्टेंस लगे होते थे, इसमें हमारे डायोड्स लगे होते, ठीक है. You must have solved different electrical circuits when we have here resistor, one another resistor here. We try to find out the equivalent resistance of the circuit. तो उसी आपकी कॉन्सेप्ट के ऊपर ये ब्रिज रेक्टिफायर का सर्किट है. 4 different diodes connected in a special arrangement and resistor in between them. We will apply the same input, sinusoidal input Vm sin omega t, and we will try to see how this particular circuit behaves for positive half cycle first and then for negative half cycle. Okay, so this is our behavior of the circuit for positive half cycle. ठीक है, पॉजिटिव हाफ साइकिल है तो वी विल ट्राई टू ऑब्जर्व which diode is forward bias and which diode is reverse bias. तो हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव पार्ट लगा हुआ है, तो दिस डायोड इज इन ऑन स्टेट क्योंकि यहाँ पे उसका P है. तो वन डायोड इज दिस विच इज फॉरवर्ड बायस. फिर हम आगे चलेंगे, इधर इस तरफ आते हैं, इस तरफ आते हैं, तो ये हमारा N आ गया पहले, इस तरफ N है, इस तरफ P है, तो दिस डायोड इज रिवर्स बायस. सिमिलरली यहाँ पे पॉजिटिव पार्ट था, यहाँ पे इसका N पार्ट कनेक्टेड है, तो दिस इज रिवर्स बायस. यहाँ पे N नेगेटिव टर्मिनल है और यहाँ से भी N कनेक्टेड है, तो दिस इज अवर ऑन सर्किट, ऑन डायोड. ठीक है, नाउ वी विल ट्राई टू सी वेदर देयर इज ए पाथ एग्जिस्ट थ्रू व्हिच करंट कैन फ्लो. वो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं. हमने आइडियल डायोड से रिप्लेस कर, आइडियल इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्लेस कर दिया है. ये सिंपली शॉर्टेड दिस लाइंस, और जो हमारे रिवर्स बायस में थे उनको हमने हटा दिया है. तो हम यहाँ से हमारा इनपुट जाएगा, ये वाला डायोड फॉरवर्ड बायस है, तो यहाँ से हमारा करंट यहाँ तक जा सकता है. फिर इस रजिस्टर के थ्रू होते हुए ये वाला डायोड भी हमारा फॉरवर्ड बायस था, यहाँ से पास करते हुए कंप्लीट कर देते हैं. तो यस, देयर एग्जिस्ट अ पाथ थ्रू व्हिच करंट कैन फ्लो फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल. और आपका अगर करंट फ्लो कर सकता है तो हमने आउटपुट जो लेनी थी वो लेनी थी रजिस्टर के अक्रॉस, जिसका पॉजिटिव पार्ट इस तरफ है. ये आपको ध्यान में रखना है. ठीक है, अब ये अगर हो गया है तो उस केस में हमारे आउटपुट क्या आएगी, जो भी हमारी इनपुट पे थी, क्योंकि बिकॉज वी आर टेकिंग आइडियल डायोड. जैसे जैसे आपकी इनपुट वोल्टेज बढ़ेगी, ठीक उसी तरीके से आपकी आउटपुट वोल्टेज भी चलती जाएगी. ठीक है, इसको समझने में किसी को दिक्कत हुई हो तो बताइए आप. Okay, now you can see how the arrangement of the diode and the direction of the diode is important for this circuit. अगर आपने एक भी डायोड गलत तरीके से लगा दिया तो you won't be able to find this particular path and your output will not be the desired output that we want for a full wave rectifier circuit. ठीक है, तो आपको आप यस सर जो रेजिस्टेंस आ रहा है उसके राइट साइड पे नेगेटिव होगा या पॉजिटिव? ये आप जहां हमारे पहले साइड में पॉजिटिव आ रहा है उसी तरफ एक बार पॉजिटिव ले लीजिए. ओके, उससे आपका क्लियर हो जाएगा. क्योंकि हम क्या होता है ना कि रेक्टिफिकेशन में किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमें आउटपुट चाहिए, हमें पॉजिटिव में चाहिए तो हम इस तरीके से लेंगे. अगर इनको आप रिवर्स कर दोगे
तो यहाँ पे आपको सिंपली जो आउटपुट मिलेगी वो जो है इस तरीके से मिल जाएगी। ठीक है, ऐसे ही सेकंड हाफ साइकिल के लिए मिलेगा, तो उसमें आपका नेगेटिव में आ सकता है, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो until and unless स्पेसिफाई नहीं किया जाता है, we will try to go for the positive side only. In input, current will flow, voltage will be in positive direction also, negative direction also. In output, there will be voltage will be only in positive direction. ओके सर। ठीक है, तो अगर आपने याद करने का आप इसका मैं तरीका ये हो कर सकते हो कि टू डायोड्स विच आर अपोजिट टू ईच अदर, उनकी डायरेक्शन आपकी सेम रहे, ये भी इस तरीके से, ये भी इस तरीके से, फिर ये भी इस तरीके से, ये भी इस तरीके से। इन दोनों को रिप्लेस कर दो, उसी टाइम पे इन दोनों को रिप्लेस कर दो, तो भी आपका सर्किट सेम बिहेव करेगा। ठीक है, ओके सर। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन रिवर्स, इन नेगेटिव हाफ साइकिल, कि उसमें हमारा क्या होता है। ठीक है, तो दिस इज अवर नेगेटिव हाफ साइकिल। दिस इज नेगेटिव हाफ साइकिल। नाउ नेगेटिव में हम फिर से वही चेक करेंगे कि विच डायोड्स आर फॉरवर्ड बायस एंड विच आर रिवर्स बायस। तो नेगेटिव हाफ साइकिल में आपको याद हो तो हमारा डायोड इस तरीके से लगाता है कि यहाँ पे एन था, दैट मीन्स दिस डायोड विल बी फॉरवर्ड बायस। फिर ये वाला हमारा पॉजिटिव, यहाँ पे पी था डायोड का, तो ये रिवर्स बायस होगा। ठीक, इसकी अपोजिट में जो था यहाँ पे एन था डायोड का, लेकिन यहाँ पे हमारा प्लस था वो है, तो यहाँ पे भी आपका रिवर्स बायस हो जाएगा, एंड दिस डायोड विल बी फॉरवर्ड बायस। नाउ यू सी द अमाउंट, द डायरेक्शन ऑफ द करंट which will decide the magnitude, sorry, the sign of the output voltage। कि आप करंट की डायरेक्शन जो है ना, करंट का फ्लो का ग्राफ बना, पाथ बना लीजिए। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल है, तो दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, एंड करंट विल फ्लो अलोंग दिस पाथ। यस सर। ठीक है, यहाँ से वो ये डायरेक्ट फॉरवर्ड बायस था, इस रास्ते पे जाएगा, देन दिस फ्रॉम हियर एंड हियर। नाउ यू कैन सी दैट इन द प्रीवियस सर्किट आल्सो वी गेट द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग लाइक दिस। उसमें भी हमारी डायरेक्शन ऑफ करंट यही थी, और इसमें भी हमारी डायरेक्शन ऑफ करंट यही है। So we will get the output in the same direction as the previous one। तो इसमें भी जितनी हमारी थी सेम इसी तरीके का साइकिल इसमें भी मिलेगा। So we get similar output in negative half cycle also as well as positive half cycle। दोनों का आप इकट्ठा लिखाना चाहेंगे तो फिर हम इस तरीके से दिखाएंगे। We apply this input, we get this output। Now with using same method we will calculate the DC voltage। ठीक है, तो उसमें हमारा एक ही हाफ साइकिल में था, इसमें दोनों हाफ साइकिल में है, तो when you will solve you will get exactly double value। So instead of 0.318 we are having here 0.636 times the peak voltage of the input signal। So this is how the full wave bridge rectifier looks like and how it behaves। If you have any doubt you can ask now। Okay, this was the bridge rectifier circuit। For positive half cycle, two opposite diodes are conducting in forward bias region, and direction of current is this way। For negative half cycle, yes, सर चैप्टर का नाम क्या है ये वाला? ये हमारा सेकंड चैप्टर है बुक में। सेकंड है, ओके सर, ओके। सिलेबस में हमारी फर्स्ट यूनिट है, बुक में सेकंड चैप्टर है। सब सेकंड चैप्टर से स्टार्ट कराया या फिर फर्स्ट चैप्टर से? नहीं, क्लास में तो हमारा फर्स्ट से स्टार्ट हुआ था। ओके सर। यस सर फर्स्ट चैप्टर के कई टॉपिक हैं जैसे जीनर डायोड वगैरह। हाँ हाँ, नहीं वो भी हम जब इसके एप्लीकेशन आएंगे तब उनको कवर करेंगे। ओके सर। यस, अच्छा, मतलब आपने तो बीच में करा दी सेकंड चैप्टर फर्स्ट चैप्टर के बीच में? फर्स्ट चैप्टर के बीच में आपने सेकंड चैप्टर शुरू करा दिया होगा? नहीं, बीच में नहीं, जो आपके आप बुक के अंदर जो है ना, आप बुक को रेफर कीजिए, लेकिन उसमें से क्या पढ़ना है वो दैट इज गिवन इन योर सिलेबस। ठीक है, Okay, क्योंकि बुक के लास्ट में तो आपको कई सारी चीजें दी हुई हैं, हाउ टू यस सर। बोलते हैं
डायोड की फंक्शनिंग कैसे चेक करें कि हार्डवेयर आपको दिया जाए, आप पता लगाइए। हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सर्किट थ्योरी। यस, ओके सर। ठीक है। तो बुक में आपकी जो चीजें हैं उसमें प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी दी हुई हैं, जो कि आपकी लैब्स के अंदर डिस्कस होती हैं। कि यस डायोड आपको चेक करना हो कि वो ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो यू यूज ए मल्टीमीटर, उसमें डायोड के सिंबल पे जाइए, वहां से पता लग जाता है। डायोड की स्पेसिफिकेशन शीट दी हुई है, उसमें देख सकते हो क्या क्या चीजें दी जाती है। ठीक है। तो इन द क्लास वी विल कवर द टॉपिक्स अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, एंड आप अगर कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हो, यू वांट टू गेट मोर डिटेल्स इन डीप, then you can refer to the textbook also and more reference books also. ओके सर। Okay, so इसमें अब सर फुल वेव रेक्टिफायर में आपको यस न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, क्योंकि बुक में जो न्यूमेरिकल्स हैं वो काफी कम है और सॉल्यूशंस के साथ नहीं है। यस सर। बुक जो न्यूमेरिकल्स जो है वो आपके कुछ तो बुक्स के एंड में दिए हुए हैं, कुछ आपके जो ट्यूटोरियल्स हैं उसमें भी आपके न्यूमेरिकल्स ही सॉल्व करवाए जाएंगे। जितने भी आपके ट्यूटोरियल्स हैं उसमें आपका यही मोटो यही है उनका, that you will be given a set of questions that you have to solve in case you don't आपको कोई डाउट आता है तो आपको वो डाउट सेशन वहीं पे क्लियर करके जाए। बाकी जो है वो रेफरेंस बुक्स हैं, उसमें भी आपके कई सारे न्यूमेरिकल्स हैं, और जो इसके अनसोल्ड न्यूमेरिकल्स हैं उनको आप सारा सोल्व कर सकते हो। दैट विल बी मोर देन इनफ फॉर दिस सब्जेक्ट। हाँ, उसमें कोई डाउट लगता है, सारे सॉल्यूशंस नहीं दिए गए हैं, तो वो आप अपने आप मुझसे पूछ सकते हो। किसी भी एक दिन हम सेशन रख सकते हैं कि सर हमारे ये कुछ क्वेश्चन है, तो वो हम वहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है। आप क्लास में ना करना चाहो, वैसे पर्सनली पूछना चाहते हो, तो आप वैसे भी मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हो। सर आई ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन दिस वे एंड आई एम स्टक हियर, आई डोंट नो हाउ टू मूव फॉरवर्ड। तो मैं आपको तभी बता दूंगा फिर उसी टाइम। ओके सर। ओके, so in today's class I think it is time now. Just remember that in full wave rectifier circuit you have to make the connections of the diode such that the two opposite diodes are facing in the same direction. So for first one half cycle the direction of the current will be like this. For another half cycle the direction of current will be like this. The opposite diodes facing each other, that will be conducting in one particular half cycle. Okay, so सर this एक is बार और गेट वाली स्लाइड शो करना। okay, just 1 minute. इसमें अगर हम प्रैक्टिकल डायोड लगाते हैं तो उसमें हम सिंपली जो है वो बैटरी से उसको रिप्लेस करते हैं। नाउ वी विल ट्राई टू सी व्हाट वैल्यू वी विल गेट। तो यहाँ पे अगर आप देखिए करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में हमारा जो इनपुट आउटपुट आया था वो आया था Vm माइनस Vp। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपका आएगा Vm माइनस 2 टाइम्स Vt। आप यहीं पे वो अपनी केवीएल की इक्वेशन लगा सकते हो कि V इनपुट, फिर यहाँ पे जाओगे माइनस Vt, फिर यहाँ पे जाओगे माइनस IR, फिर यहाँ पे जाओगे माइनस Vt इक्वल टू 0। So you will get that V output V naught is equal to Vm minus 2Vt। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। देयर इज वन डिफरेंस हियर बिटवीन हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। कई बार हम गलती में क्या करते हैं कि ये दोनों साइकिल तो ठीक बना देते हैं, ठीक है, लेकिन जो पीक वैल्यू लिखते हैं यहाँ पे वो हम Vm माइनस Vt लिखते हैं। ठीक है, आपकी क्लास अभी एंड कर रहा हूँ मैं, ठीक है, अब बाद में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। सर ये प्रैक्टिकल डायोड है क्या? प्रैक्टिकल के लिए था। ये प्रैक्टिकल डायोड के लिए था। ठीक है, Thank you, sir. थैंक यू सर। ओके ओके, थैंक यू सर। जस्ट वेट अ मिनट। इसको नोट कर लें, किस चीज को? इसको प्रैक्टिकल डायोड वाले को। हाँ 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 बिल्कुल। अभी आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर। ओके, सर और गेट में कंफ्यूजन थी। हाँ हाँ एक मिनट।
बताइए। सर जो उसकी लास्ट इनपुट थी, जब दोनों में 10 वोल्ट हमने किया था, सर जो फर्स्ट डायोड है उसके दोनों तरफ जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, वो जीरो नहीं हो जाएगा? नहीं नहीं नहीं, जीरो कैसे होगा? इधर भी 10 उधर भी 10। उधर 10 नहीं है ना, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे भी 10 है, लेकिन ये आगे जाके ग्राउंड हो रहा है, फिर यहाँ पे कनेक्शन है। आप पैरेलल में तो 10 वोल्ट लगाते हो तो एक ही बैटरी से कर सकते हो ना। अगर मैं यहाँ पे करना चाहूँ तो इन दोनों को इस तरीके से यहाँ पे दोनों पे कनेक्शन कर दो, यहाँ पे 10 वोल्ट लगा दो, दोनों लाइट पे 10 वोल्ट ही मिलेगा क्योंकि दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं। तो यहाँ पे Yes. यहाँ से जो दोनों आगे सीरीज में कनेक्शन होगी, तो यहाँ से कनेक्शन बना हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि दोनों 10 वोल्ट है तो इधर भी 10 वोल्ट होगी, जीरो हो जाएगा, नहीं। यहाँ पे 10 वोल्ट है दोनों पे, यहाँ पे दोनों पे 0 वोल्ट। ओके सर। ओके सर एक सेकंड, वो लास्ट फॉर्मूला रह गया था डेरिवेशन वाला। डायरेक्शन वाला दैट इज 0.318 टाइम्स Vm minus 2 Vp, 0.636 0.636 टाइम्स Vm minus 2 times Vt।